हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटिव्स बायोलॉजी। आज आम यही वीडियो रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवा किसी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को बुझा। देखो फास्ट पढ़िया स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज वेरी इंपोर्टेंट। तुम जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम हम से फ्लावर रो स्ट्रक्चर और तार डिफरेंट ऑर्गन रो फंक्शन ये तुम निहाती गोटे क्वेश्चन देखा मिल। देखो फास्ट कौन लिखाई ना पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड होल्स। होल्स माने कौन ऑर्गन मन रख। होल्स माने होची ऑर्गन। कौन लिखाई फ्लावरिंग प्लांट्स पोजेसेस ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर। जेकोसी फ्लावरिंग प्लांट बा सपुष्पक उद्भिद मान पाखे गोटे स्ट्रक्चर देखा जाए जहाँ आम कहे फ्लावर विच इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ही आमर फ्लावर मानकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, a flower is typically composed of four main holes attached to a central stalk known as thalamus। मन रख जेकोसी फ्लावर रो आमर चार्टा होल्स रोज। होल्स मैंने कौन कही ना ऑर्गन। नेक्स्ट कौन ना अटैच्ड टू ए सेंट्रल स्टॉक से माने गोटे सेंट्रल एक्सिस सहित कनेक्ट होती जहाँ आम कौन कहे ना थैलामस। इट्स वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट मीन एठू कौन बुझे फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ एन प्लांट। आउ गोटे फ्लावर चार्टा पार्ट रोज कौन कौन कैलिक्स कोरोला एंड्रोसम एंड गाइनेसम। आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा नेक्स्ट पेज रे। नेक्स्ट लिखा कौन ना होल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माने होल्स नहीं माने किसी प्लांट रो जो फ्लावर अच्छी से फ्लावर किसी ऑर्गन रो ना आ तार फंक्शन कौन अच्छे। मुझे कहती चार्टा ऑर्गन अच्छी गोटे हूँ कैलिक्स कोरोला एंड्रोसम एंड गाइनेसम। फर्स्ट आम कौन पढ़ा ना कैलिक्स। कैलिक्स कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। तुम समस्त मंदार फूल देखि मंदार फूल लोअर साइड रे किसी गोटे ग्रीन कलर स्ट्रक्चर थी जो कि रेड कलर पाकुड़ा पा पेटाल्स गुड़ा बाहर थे से ग्रीन कलर स्ट्रक्चर को आम कहे कैलिक्स। से कैलिक्स गोटे गोटे पार्ट को आम कौन कह ना सेपल। ए टाइपिकली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन हो पत्र भाई देखा दैट प्रोटेक्ट द बर्ड स्टेजेस ऑफ द फ्लावर। जो टाइम रे कि गोटे फुला बर्ड बा कड़ी कंडीशन थी से प्रोटेक्शन दो। नेक्स्ट लिखाई कोरोला कंपोज ऑफ पेटल्स। फुलर जिते सारा पाकुड़ा अच्छे से पाकुड़ा मान आम कह पेटल्स है। आ पेटल्स मैंने क्या नहीं पेटल्स मान ग्रुप ऑफ पेटल्स कौन तैयारी करेंगे से ना कोरोला तैयारी करेंगे। मन रख ऑफ्टन ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। फुलर जो पाकुड़ा गुटाक जनरली ब्राइट गोटे सुंदर कलर होती कौन पे ना टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर मान को अट्रैक्शन करने। नेक्स्ट लिखा है एंड्रोसम वेरी इंपोर्टेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंपोज्ड ऑफ द स्टामेन। एंड्रोसम हूँ कौन गोटे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और से क्या नहीं स्टामेन को लेकिन तैयारी थी। नेक्स्ट लिखा है गाइनेसम। गाइनेसम को आम कौन कहे पिस्टिल बा कार्पेल कहीपर। ये कौन हो ना एंड्रोसम हूँ आम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनेसम हूँ आम कौन ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये किए थी आमर ना पिस्टिल और दि कार्पेल्स। दैट मीन्स गाइनेसम पिस्टिल बा कार्पेल को लेकिन तैयारी आम एमती भी कहीपर जे गाइनेसम अलग ना हो पिस्टिल बा कार्पेल्स। नेक्स्ट आम बुझा कौन भलसे मन रख जो आमर एंड्रोसम एंड गाइनेसम अच्छे ये दुटा हूँ मेन इंपोर्टेंट ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज एंड्रोसम एंड गाइनेसम आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एन फ्लावरिंग प्लांट but the calyx and corolla does not take part directly in the sexual reproduction but helps in the sexual reproduction. That's why calyx and corolla are called the accessory organ. Accessory organs means those organs which are responsible or those organs which are help in the sexual reproduction but do not directly involved. These are calyx and corolla. नेक्स्ट आमर कौन अच्छे
ना मेल स्ट्रक्चर जहाँ आम कहे एंड्रोसियम गाइनिसियम सॉरी एंड्रोसियम स्टामेन कहे फास्ट लिखाई कौन ना ए स्टामेन हैज टू मेन पार्ट आंथर एंड फिलामेंट गोटे स्टामेन रो दीटा पार्ट थी तुम देखी ये हूँ गोटे सपोज आंथर थी दीटा लोब थी ये गोटे थी फिलामेंट मन रख ये टाइप स्ट्रक्चर हो आपको आम कह फिलामेंट उपरटा को आम कह आंथर दैट मीन्स ए पूरे स्ट्रक्चर को आम कौन कहे ना स्टामेन स्टामेन दीटा पार्ट अच्छे गोटे पार्ट को आम कहे आंथर और गोटे पार्ट को आम कहे फिलामेंट नेक्स्ट कौन लिखाई ना फिलामेंट द स्टॉक ऑफ दैट सपोर्ट दी आंथर मुझे कहती जो आंथर ये गोटे फिलामेंट थी ए फिलामेंट काम कौन सी आंथर को सपोर्ट कर नेक्स्ट लिखाई कौन ना आंथर कंसिस्ट ऑफ contains the microsporangium or the pollen containing sac आम कौन बुझा ये हूँ आंथर ये आंथर एमती चार्टा लोब थी 1 2 3 4 अच्छा ये चार्टा लोब भितर एक्चुअली आम कौन हो ना पोलेन ग्रेन गुड़ाक फॉर्मेशन हो आंथर भितर जो पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन होमें कह माइक्रोस्पोरेंजियम बा पोलेन ग्रेन कंटेनिंग सैक नेक्स्ट कौन अच्छे आमर ना स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एटा हूँ वेरी इंपोर्टेंट तुम एग्जाम 2 मार्क क्वेश्चन आसपे कौन लिखाई ए माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स ये 4टा लेयर्स थी कौन कौन एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर एंड टेपेटम मन रख ये हूँ गोटे सपोज आंथर ये हूँ आमर तार फिलामेंट ये हूँ आम कह आंथर आम कह फिलामेंट आम आंथर को कमी टीएस कट करवा टीएस माने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जदि से आमको गोटे ए टाइप स्ट्रक्चर देखो बुझा पड़ा यहाँ कौन आम बुझा ना ये हूँ गोटे आंथर स्ट्रक्चर से आंथर आम 4टा लेयर्स अच्छे कौन कौन ना एपिडर्मिस एंडोथेसियम 3 नंबर अच्छे मिडिल लेयर लास्ट लेयर अच्छे टेपेटम वेरी इंपोर्टेंट ना हाँ जो एग्जाम क्वेश्चन आसो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन एन आंथर देयर आर 4 लेयर्स दे आर एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर एंड टेपेटम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट टॉपिक को आम जा कौन लिखाई इनर मोस्ट टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर दैट नॉरिश द डेवलपिंग पोलेन ग्रेन से 4टा लेयर्स भर जो आम टेपेटम अच्छी सी हूँ सब इनर मोस्ट भितर रोकवा लेयर तार फंक्शन कौन इट प्रोटेक्ट दि डेवलपिंग पोलेन ग्रेन मानकर जो डेवलपमेंट होती सी नरिशमेंट दो खायापी दो नेक्स्ट लिखाई कौन ना विथिन द माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू पोलेन ग्रेन ये माइक्रोस्पोरेंजियम भितर देख ये लिखाई जो गोल गुड़ाक देखुच आम कह माइक्रोस्पोरेंजियम ये भितर ही आमर कौन हो ना पोलेन ग्रेन्स गुड़ाक फॉर्मेशन हो लिखाई द मैच्योर पोलेन ग्रेन इवेंचुअली रिलीजेस 2 मेल गेमेट दैट मीन्स आम कौन बुझा माइक्रोस्पोरेंजियम जो अच्छे से माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर को आम पोलेन ग्रेन बोली कहवा और से पोलेन ग्रेन गुड़ाक कौन है इवेंचुअली 2टा मेल गेमेट को फॉर्मेशन करते ये आमर माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट द फीमेल reproductive organ which is called the gynoecium or the pistils pistil or carpel consists of the 3 parts तार 3टा parts रोची this gynoecium and or the pistil is the female reproductive structure of the angiosperm which consists of the 3 parts one is the stigma style and ovary stigma is the receptive surface of the pollen grain माने जोठी आसी pollen grain पड़ुथिबो style stalk connection is the stigma to the style diagram देखि जानि परियो it is the diagram of the pistil which consists of 3 parts upper part is the stigma the middle elongated part is called style and the lower larger part is called the ovary that means a pistil or the female reproductive organ consists of 3 parts one is the stigma second is the style third one is the ovary when the pollen grain are pollinated it was generally fall off on the स्टिग्मा जो टाइम रे पोलेन ग्रेन गुड़ाक आसी पड़ुथिबो कोडी पड़ुथिबो ना स्टिग्मा ऊपर ही पड़ुथिबो कौन लिखाई देखो ना फीमेल रिप्रोडक्टिव और द गाइनोसियम पिस्टिल द पिस्टिल
or the carpel consists of three main parts. तीनटा parts रोचे तार. One is the stigma, the receptive surface ମୁଁ ଯେମିତି diagram କରୁଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର stigma, style, ovary. Style is the connecting link between stigma and ovary ଅଛି stigma ଆଉ ये ovary की connection କରୁଛି ଆମର style. And ovary contains the megasporangium. ଏ ovary ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ part ରହୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ovules ବୋଲି କହୁଛେ. And ovules developed into seed. Ovule maturation ହେଲା ପରେ ସେ seed ବା ମଞ୍ଜିରେ convert ହେଉଥିବ. Next, structure of the megasporangium or the ovules. ये ହେଉଛି ovules ଗୋଟେ structure. Diagram देखि पड़ुଥିବ. Is the funicle, hilum, micropyle pole, integuments, nucellus, embryo sac and chalgal pole. First कौन लिखा है ना structure of the megasporangium or the ovules. The ovules is attached to the ovary wall by the stalk is called funicle. हम बुझिबा गोटे ovules रो जो stalk अछि डेम्फो अछि ताको हमें कहउछे funicle. The point of attachment of hilum is called hilum. देखो suppose ये होछि गोटे ovules जोटी से अटैच होछि से पार्ट को हमें कहबा hilum बोली. ए जो ता स्टॉक अछि से स्टॉक को हमें कोन कहउछे ना funicle. नेक्स्ट लिखा अछि इंटीगुमेंट्स. इंटीगुमेंट्स माने कोन ना इट इज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल्स. ए ओव्यूल्स रो जो कवरिंग को हमें कोन कहबा इंटीगुमेंट्स. वेरी इंपोर्टेंट. ओव्यूल्स रो जो लेयर ताको तार जो कवरिंग अछि ताको हमें कहउछे इंटीगुमेंट्स. नेक्स्ट लिखा अछि माइक्रोपाइल. What is micropyle? A small opening in the integuments through which pollen tube enters. ये होछि micropyle is गोटे छोटो ओपनिंग कोथरो ओव्यूल्स रो जो भीतर दे कि हमरो pollen tube एंट्री करछ. नेक्स्ट देखै चल जा micropyle रो अपोजिट पार्ट को हमें कोन कहउछे ना चला जा. द बेस ऑफ द ओव्यूल्स. ओव्यूल्स रो बेस को हमें कहबा चल जा अपोजिट द micropyle जे कि micropyle रो अपोजिट हेतिबो. वेरी इंपोर्टेंट. Then nucellus, the central body of the ovules containing the embryo sac, the female gametophyte. मन रखो ये जो ovules रो center a group of homogeneous parenchymatous cells are there which is called the nucellus. Next one, this is the diagram of the nucellus. The central part is called the embryo sac developed from the nucellus. It contains the micropyle and opposite to the chalgellin. It is the hilum, funicle, micropyle pole, integuments, nucellus and embryo sac. This embryo sac is also called the female gametophyte. That means those structure which can produce the female gametes are called the female gametophyte. In case of the flowering plant, the embryo sac represent the female gametophyte. That means those structure which can produce the female gametes is called the female gametophyte. This female gametophyte is otherwise called the embryo sac, which are generally developed inside the ovules or inside the nucellus, any one of the cell of the nucellus. Next one is the fertilization. Fertilization is the special structure in the angiosperm. It is the fusion of male and female gametes. जानिथिबो जोटी हमर मेल और फीमेल gametes से fertilization होस ताको हम कहउछे fertilization बा fusion. It is a unique process in the flowering plant is called double fertilization. जो हमर angiosperm मन होछंदी से angiosperm मनक पाखरे केवल हमर double fertilization देखा देबो जेको हम ओडिया रे दैत्य समायन बोली कहउछी. That means double fertilization is the only characteristic features of an angiosperm or the flowering plant. सपुष्पक उद्भिद. First thing is the germination of the pollen on the stigma. Stigma होछ हमर female reproductive part रे गोटे स्ट्रक्चर. या ऊपर आसी pollen tube पड़ला पर गोटे ट्यूब तैयारी करे. ट्यूब को हमें कोन कहउछे ना pollen grains बा germination of the pollen. The pollen lands on the stigma and a pollen tube begins to grow. A pollen tube again developed and inserted into the ovules. से pollen tube develop होला पर आसी कि हमरो ovules पाखरे पहुंचबो. Then entry of the pollen tube into the embryo sac. There is an embryo sac is present inside the ovules जो भीतर को कि हमरो pollen tube entry करबो. Through this style enters to the ovules by micropyle. मन रखो जो हमरो pollen tube entry करछि सब दिन micropyle दे के जीवो. pollen tube जो हमरो entry करबो ovules भीतर का दे कि ना micropyle दे के जीवो and it release the two male gametes. दीटा male gamete को release करबो into the embryo sac. Embryo sac को हमें कोन कहउछि ना female gametophyte. Which is very important.
Next one, the double fertilization. Double fertilization because it consists of two fertilization. One is the syngamy, second one is the triple fusion. Very important. Why fertilization is called a double fertilization? Because it consists of two stages. One is the syngamy, other is the triple fusion. This syngamy is also called the generative fertilization. In the triple fusion is also called the vegetative fertilization. First one, syngamy বা generative fertilization. One male gametes fuses with the egg cell. ମନେ ରଖ ଗୋଟେ male gamete ଆସିବ ସେ egg ସହିତ fertilization କରିବ to form the embryo. ସେ embryo ବା ଗୋଟେ zygote ତିଆରି କରିବ ଆକୁ ଆମେ କହିବା syngamy. That means ଆମର syngamy or generative fertilization ର जो result is the one or more embryo or the zygote. Generative fertilization रे सबने ଗୋଟେ zygote ତିଆରି होउथबो. Which process is called the syngamy? It is the first process. And second process is called the triple fusion, which is also called the vegetative fertilization. The other male gametes fuses with the two polar nuclei to form the primary endosperm nucleus, which is developed into the endosperm. This endosperm, the ploid is the 3N, which provides the nutrition to the embryo or the zygote. It means endosperm is a nutritious tissue that provides nutrition or the nourishment to the zygote. That means कौन बुझे ना फर्टिलाइजेशन दुटा स्टेप अच्छी गोटे हूँ सिनगेमी आउ गोटे हूँ ट्रिपल फ्यूजन. सिनगेमी कौन हो ना गोटे मेल गैमेट आसिक एग सहित फर्टिलाइजेशन कले जायगोट तैयारी हम जो प्रोसेस को आम कहे सिनगेमी. और सेकेंड हूँ ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन कौन हम ना गोटे मेल गैमेट आसिक दुटा पोलार न्यूक्लियस सहित फर्टिलाइजेशन कर जो कि कौन तैयारी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आम सर्टकट PEN पेन कहे. This develops into endosperm. से PEN पेन कौन हम अगेन एंडोस्पर्म में डेवलप हो. यूज तरह डायग्राम हमारा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन. नेक्स्ट वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. वेरी इंपोर्टेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन हो एक्चुअली आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर पार्ट्स ट्रांसफॉर्म टू फ्रॉम द फ्रूट एंड सीड्स. फ्लावर जहाँ जहाँ किसी पार्ट अच्छे सब फल और मंजिरे डेवलप होते. डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म को डेवलप होती ना प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दिस द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. दैट मीन्स जो एंडोस्पर्म अच्छे एंडोस्पर्म सबुदिन आमर एम्ब्रियो को खाया दौर. नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो. द जाइगोट डेवलप्स इनटू मैच्योर एम्ब्रियो. आमर कौन हम एम्ब्रियोटा केमती डेवलप हो ना जाइगोट. तो जाइगोट सबुदिन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द सीड. सीड को डेवलप हो द ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड माने ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन पर सीड रे कन्वर्ट हो. नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट. फ्रूट डेवलप हो ओभारी. ओभारी ही फ्रूट डेवलपमेंट हम. ओभारी जो कवरिंग अच्छे जहाँ हम ओभारी वाल बोली कहे. ओभारी वाल डेवलपमेंट हम पेरिकार. पेरिकार माने फ्रूट वाल. फ्रूट वाल को हम कहे फलर चोपा विच एनक्लोजेस द सीड जी की सीड को कवर करके रखी. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट. सी कौन कहे जो आम अच्छी सेपाल पेटाल स्टामेन स्टिग्मा एंड स्टाइल यूजुअली फॉलोअप माने झड़ी पड़ो फर्टिलाइजेशन पर. ओभारी डेवलपमेंट हम फ्रूट रे. ओव्यूल्स डेवलप हम आम सीड रे. एग हम जाइगोट जहाँ आम जाइगोट एम्ब्रियो हम. फनिकल जो अच्छी सी कन्वर्ट हम स्टॉक ऑफ द सीड. माइक्रोपाइल हो माइक्रोपाइल सीड माइक्रोपाइल सीड्स जो सीड गोटे छोट होल अच्छे डेवलप हम. नेक्स्ट न्यूसेलस इज डेवलपमेंट इनटू द पेरिस्पर्म. आउटर इंटीग्यूमेंट्स इज डेवलपमेंट इनटू टिस्टा. इनर इंटीग्यूमेंट डेवलपमेंट इनटू टेगमेन. synergids degenerate. And secondary nucleus is the endosperm. Antipodal cell is the degenerate. That means our inner outer integuments convert of tista re. Inner integuments convert of tegmen re. Synergid cell degenerate is. Secondary nucleus convert of endosperm. And antipodal cell develop of our degenerate means antipodal cell that is. These are the complete about the sexual reproduction in the flowering plant. Thank you.